Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Please have a seat, Anand. Thank you, sir. So, Mr. Anand, right? Yes, ma'am. Yes. Uh, can you please introduce yourself? Sir, I'm Anand Sadavarte. I have completed my schooling from Basmat Nagar and then from Chhatrapati Sambhaji Nagar. Later on, I have completed my graduation from Maharashtra Institute of Technology. And presently, I'm working as an administrative officer at Indian Council of Agriculture Research, Srinagar, Jammu Kashmir, sir. Okay, fine. So, your first name is Anand. Yes, sir. Do you know what is the difference between pleasure and happiness? Sir, pleasure could be spiritual. It adds aspect of the spirituality, which is the containment. Whereas happiness is anything. It's just a normal emotion, we can say. But when we're talking about the pleasure, it is in a more content one, sir, kind of. Okay. So, happiness is okay. Tell me one thing. If suppose you eat your favorite dish, then do you become happy or it gives you pleasure? Pleasure is a kind of materialistic thing, sir, and happiness is which gives an inner contentment. Just like if I am eating my favorite dish, it gives me pleasure. But sir, if I am doing something which makes me uh, feel like I have done something good, that is a happiness. That's what I think, sir. Yes, sir. And can you also point out the neurochemicals which are released when we become happy? Sir, I don't know the exact chemicals, but endorphin that releases, which makes you excited and makes you happy, sir. Yes, sir. There has been World Happiness Report. Do you know which agency publishes? Sir, sir, exactly I don't know, sir, but it's United Nations. Agency is under United Nations Sustainable Development Mission, sir. Right. Okay. And what are the parameters of happiness in this report? Sorry, sir, I'll have to read about it, sir. Okay. Suppose you are made the administrator of an area. How will you judge the happiness of your area? Sir, first thing I'll recognize the identify the basic necessities, those which are required for the normal living, sir. Just like food, normal health conditions, basic. Yes, sir. Second thing, at the same time, there is a need of so basic necessities that includes food and all those things, but at the same time I will ensure that some entertainment things, just like some sabhagraha for the cultural fest, to have a social gatherings to exchange the views, so that will be the another one thing, sir. Okay. Okay. Have you heard of happiness curriculum in Delhi, in the schools of Delhi? No, sir, I am not much aware. Okay. And any idea about the happiness model of Bhutan? Sir, Bhutan itself has started that happiness index in initial phases. So, exactly I can't say over these things, but I'll read about it, sir. Fine. Yes, sir. So you have been doing the research. Sorry, you are working in the ICAR. Can you please elaborate your job profile currently? Sir, presently I am working as an administrative officer at Indian Council of Agriculture Research, which is in Srinagar presently. Sir, my work is administrative work, where I have to coordinate and manage the day-to-day life things. Just like there are two things like personnel management. In that, I have to manage the salaries, wages of the laborers as well as employees of the institute. At the same time, we have to look after the increments, promotions, recruitments. At the same. So I can say like it's a kind of human resource management job. Yes, sir. It is a kind of, sir, but at the same time, we have to procure various things because it's a research and development institute. So we have to procure various things on GEM portal. So for that purpose, also we have to. What kind of stuff you have to purchase? Sir, we purchase various chemicals as well as. So you are also part of that process. Yes, sir. Okay. So what is your role in the procurement? Sir, the main role of administration is to have a proper means there is a proper flow chart. Tendering.
Tendering, yes, sir. We have to do tendering also, as well as if some there are some GFR rules under which if some things are below certain financial limits, we can directly procure them from the GEM portal as well as from the local market also, sir. So for that purpose, administration's role is to find those things, and at the same time we have to check the qualities as well as the minimum financial obligations we have to check. Okay, okay. So it's been almost 1 year you are working over there. Can you recollect some experience like which has touched you while working over there? Uh, Sir, means positive or Anything, anything, any experience that you would like to share? Sir, I would like to share one experience that recently, sir, there was an issue of the as administrative as Indian Council of Agriculture Research is an agricultural institute. So there are various laborers, around 200 plus laborers are there, agricultural laborers. So there were so many grievances related to them. Means their salaries were not being paid at a proper time, and various other issues that they were not getting water facilities and other things. So and nobody was there to listen to them. They were not able to directly communicate those their issues with administration. So we have established one post, sir, that is labor welfare officer at our institute. And now that anybody who has any of the problem, they are directly going to that labor welfare officer, and that labor welfare officer will communicate those what are the grievances. Those will be communicated here in our meetings, daily meetings, and we discuss over those issues, and whatever the output or the what could be the solution, we find those solutions there, sir. So that is the one thing related to job there, sir. Regarding the labor welfare officer which you are talking about, right? Are you aware about the legal provisions of the labor welfare officer? There is a legislation which deals with the labor welfare office. Sir, exactly, there is no such kind of post in our institute, matlab, Okay, it's not formal post. it's Informal post. Okay, okay. It's not as per some law. Okay, okay, fine. Are you aware about the four labor codes which were which are basically the convergence of 44 old labor laws? yes, sir, I'm little bit aware about it, sir, but I'll have to read properly if I have to. Right. Okay, fine. Um, in the recent budget, some initiative has been taken regarding the gig workers. Are you aware about it? Yes, sir. Uh, uh, Sir, gig workers, there is a provision that there will be healthcare benefits as well as there will be registration of those gig workers who are working in the economy, and they will get an identity card, so that they can ensure the benefits of the healthcare as well as the social security benefits. Right. So you are working in the agriculture research institution. Uh, how much is the budget allocation for the agricultural research in India? Sir, specifically talking about our institute. Yeah, in India, overall budget for the agricultural research. Sir, it's about 6 to 7% of the. I'll have to read about sir exact number, but Okay, okay, fine, no problem. What are the major areas of research which are being undertaken by your institution? sir, our institute that is which is situated in Jammu Kashmir, it is one of the only institute for the temperate horticulture. Our institute works on the temperate horticultures like horticulture products like apple, walnut, peach, pear, cherry, plum. So on those things we are working. Means our institute is working for the higher yield of the production of the produce. Okay, okay. Can you point out some of the initiatives announced in the budget for research? It is in the recent budget. Sir, there has been a fellowship has been provided in this present budget for around 10,000 students, research fellows. So that is one of the initiative that for the research and development in agriculture, sir. Okay. What are the reasons of poor productivity of agriculture in India? Sir, there are several reasons behind the poor agricultural productivity. For example, first thing I would like to mention that more than 56 55% of the agriculture is dependent on the monsoon, sir. Monsoon.
for their irrigation facilities. Second thing, the agricultural farmers, they are still using the traditional technologies. That is the second thing. Third thing, that availability of high yielding variety is not towards the farmers. At the same time, there has been natural calamities that are also impacting the uh, uh, because of the climate change. So that those are the reasons that lower productivity behind the Indian agriculture, sir. And why is the youth not attracted towards agriculture? Sir, because of the, sir, lack of profitability, we can say, of the agricultural field, and which is not providing the actual financial avenues. But and at the same time, I would like to add one thing, that there has been a fragmentation of the land, sir. Around 68% of the Indian agriculturals, they are holding lands less than 2 hectares. So, due to the land fragmentation, there has been a reduced land in the hand holdings. So, farmers, the students, and the youth is moving towards the higher opportunities which are provided by the urban areas. Okay, fine. Have you analyzed the recent economic survey? Sir, I have just read it, few points. Yes, sir. Okay. How much is the share of China in the world manufacturing? Sir, I don't know the exact share, sir, exact number, sir, but it's around 20%, sir, around, sir, we can say, or more than 20%, sir. Okay. Are you aware about the four suggestions given by the economic survey for India? How should we move in economy? Sorry. Four focus areas of the budget in agriculture this year. Those are agriculture, means if GAN, if you are talking about GAN, sir, those are, that is Garib. No. My focus is only agriculture. In agriculture. Sir, there has been investment in, sir, in agricultural various districts, sir, in 100 Dhanadhanya, that Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana. Right. under which we are focusing on the capital investments in those things. Next. Second thing, that we are establishing the Makhana board in Bihar. At the same time, we are establishing the university or the institute in for the food processing and management in Bihar itself, sir, which will help to enhance the educational, higher educational for the advancements in the Bihar itself, sir. Okay, fine. So, in India, there are various issues we face in economy, right? Can you point out the three challenges posed by the global forces on Indian economy? Sir, first thing, that is huge, sir, trade deficit, sir. I would like to, as we are talking in a global term, so that is a trade deficit. We are more reliant on say, countries like China for our imports. At the same time, sir, there has been a huge crunch of employment in our Indian economy, which is the impact of a global geo trade, we can say, sir. At the same time, third thing I would like to mention, sir, about the agricultural trade, we can say, sir. Agricultural trades like dumping from the various states like China, that is also happening in our manufacturing sector, which is creating hustle in the Indian markets. So, you are working in ICR for almost a year. How can you use your knowledge and experience of working here in the administration? Sir, I am much, sir, working at ICR, it gives an privilege because it is more connected to the agriculture, and where more than 50% of the Indian population is involved in agriculture. So it helps me to understand what are the issues, and at the same time, it helps me to understand what are the progresses which are taken place under the ICR. And these research and development works has to be taken to the farmers, sir.
So these inputs I can use in the administration. At the same time, I can give the policy recommendations through various as in administration, sir. So I think this could be the role from the ICR. Sir. Does ICAR provides agri extension services as well? Yes, ma'am. We have Krishi Vigyan Kendras under ICR. So we extend whatever the research is happening at ICR. We try to extend those services through KVK Kendras, ma'am. Okay. So the point you were saying that the advantage of working in ICAR is that so that you can do with the help of your present position as well. Yes. Why do you want to join civil services then? Ma'am, civil services provides an ample opportunity and diversity to work in various fields. At the same time, it will help me to use my capacity and capabilities in Indian administration. At the same time, ma'am, this ICAR service will definitely help me, and it will add to the Indian civil services because I have the added experience from the agricultural field. So yes, ma'am. What services under agri extension services are provided by ICAR? Ma'am, at our institute, if we are in Jammu Kashmir itself, we are providing we are taking training sessions of the farmers. In that, we are telling them about the various technologies and various what are the new upcoming high yielding variety seeds. At the same time, we are having custom hiring centers at our institute. Through that custom hiring center, we give the various instruments which farmers are not able to purchase them because of the higher cost of the mechanized instrument. So we are having the custom hiring center also. Yes, ma'am. And at the same time, we are providing root stocks for the apple, different fruit plants, ma'am. Yes, ma'am. Are you aware of the innovations that are taking place there? Innovations specifically in New research in a particular field which can be groundbreaking for farmers. of Jammu Kashmir itself, or ma'am, or Anything in which you think that this research which is going on in ICAR, it can be groundbreaking in the field or it can solve a particular problem. Yes, ma'am. Specifically, I would like to talk about our institute itself. We have apple. We have apple production in our research on apple thing, ma'am. So here, I would like to mention that if those and apple from our institute, apple crops, or we can say, so those are with a higher productivity. And recently, there has been specifically apple is a temperate crop, but we are producing the varieties of apple which can be grown in a uh, hinterland itself. So that would be that could be one of the initiative that could revolutionize the Indian horticulture, and it will also help in finance, economy, and as well as it will reduce the import as well, and it will definitely help farmers to grow the of apple in their farm and ensure the nutritional habit, ma'am. Yes. Is climate change impacting the produce of the apples? Yes, ma'am. Climate change definitely impacting the agriculture in specifically apple also, ma'am. How can you tell me? Ma'am, in apple production, there is a need of a chilling period, which is means below 7 degrees Celsius temperature. There is needed. Some hours are needed for the apple production. So there, it is like due to the extreme weather conditions. Sometimes it is rainfall is happening suddenly, or due to the extreme weather conditions, or these things, the chilling period is getting affected, and it is directly or indirectly impacting the produce quality and quantity as well, ma'am. Okay. Yes. Are you aware of the controversy around PR 126 variety of rice in Punjab? Sorry, ma'am, I'm not much aware of that specific variety, ma'am. Yes, ma'am. Can you explain what is farmer's paradox? Ma'am, I'm not
exactly aware about it. Can you make a guess? Yes, ma'am. That farmers, uh, there is a huge population which is in farming agriculture, but the contribution toward the GDP is very less. That is 18% compared with the 50 around 60% of the 50% of the farmers involved in the agriculture. Actually, that is not the concept, but fine. Sorry, I'll read about it, ma'am. Can you tell me how the concept of standing waves is related to harmonics? You play guitar, it is your hobby. Yes. So, can you tell me how the concept of standing wave is related to harmonics? Sorry, ma'am. I'll have to read about it, ma'am. What is the phenomena that is involved? What is the phenomena of physics that is involved in music playing in guitar? Ma'am, when we are talking about acoustic guitar, then the plucking of the strings, the tension, due to the tension, those strings make sound, and that sound get echoed in the chamber which is provided to the guitar, ma'am. So that sound get reflected from that echoed sound we get, ma'am. So, what is that phenomena called? Sorry, ma'am. I'll Are have you to. aware of the phenomena of resonance? Can you tell me what resonance is? Ma'am, production of vibrations which leading to the different sound because of the plucking, because of the various tensions over the metal, we can say, ma'am. Okay, that is not resonance. Sorry, ma'am. I'll read about it. Uh, you have done your graduation from Baba Saheb Ambedkar University. Yes, ma'am. His was a different concept of socialism. Can you tell me what was his idea of socialism? Ma'am, he wanted a socialism which where everyone would get the equal treatment without any discrimination. At the same time, he wanted the economy must be in the hand of state itself and not in the hands of the classes. He supported to the state-led development in our socialism, we can say, ma'am. Have you heard about his Grammar of Anarchy speech? No, ma'am. Uh, you've heard about Baba Saheb Ambedkar, his teachings. What do you think is the most important phrase of his entire ideology? His most important idea or his most important phrase of his entire ideology? Educate, organize, and agitate. That is the one of the phrase that he has offered for the community. What about annihilation of caste? Ma'am, it is one of the writings of Dr. Babasaheb Ambedkar, where he has mentioned about the how this caste system has impacted the lower strata of the society. That is written in the annihilation of the caste, and what could be the things if this caste will be removed from the. What was his solution? Ma'am, he has given various solutions, including the intercaste marriages and equal treatments, having the equal, having together lunch, intercaste marriages, that is also there. So, and to first educate, take education and organize among the people, organize and fight for their own rights. Yes. Your option is PSIR. Yes. So you might have studied about various thoughts. There is one thought, utilitarianism. So there is one quote related to it. Pushpin is as great as poetry. Can you tell me what this statement is about? Ma'am, Pushpin as a uh, great as a poetry is a utilitarian thought which explains the uh, utility approach of the any of the game, just like whatever Pushpin is the game which is played in European countries. So we have to take the we have to take the utility of that thing, and we should not get involved in the what could be the other subjective matters related to that particular thing. So that's what I think, ma'am. Okay. What does the phrase personal is political
means? Uh, Personal is political actually means, ma'am, whatever is happening in your personal life, that will affect the political life also. So that shows that you are connected to the society, and whatever you are doing in your personal sphere, that will definitely reflect to the society, and that will also design and frame the social construct of the society. Yes, ma'am. You have a hobby of diary writing as well. Yes, ma'am. Do you know one of the most famous diaries that has been published? Ma'am, it's Anna Frank. Okay. What was it about? Ma'am, she has written her experiences during the Holocaust period, where she was under in a camp itself. So during whatever she has experienced, the daily that fear of death when who can get executed. So her experience she has mentioned in that diary, ma'am. How is diary writing different from blogs? Ma'am, diary writing, you have to write. Ma'am, you're specifically talking about Blogs. I'm not talking about blogs. I'm talking about video blogs. So blogs. Yes, ma'am. When we are talking about the diary writing, we can write whatever we want. Means we can manipulate the things in our diary writing. But when it comes to the video vlogs, that time whatever is happening, we can also cut whatever there, but we can actually share the actual experience whatever we are doing or whatever we are trying to vlog. So that is one of the things. Should vlogging be allowed for civil servants? It should not be allowed to the civil servants, but to some extent it should be allowed to replicate some positive aspect of the civil services, or any of the initiatives that could help the society or other which can inspire other people for the development of this society. But otherwise, if someone is using it for the personal gains or personal getting fame on all those things, so that should be curbed, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Why do you think people watch vlogs with so much consistency? Uh, Ma'am, recently we have seen that various blogs which are coming in a short duration, and there is a which one blogs letting scrolling is there, that an available age of the, we can say that age of the technology which has offered that on the your one click there has been various vlogs are present with the sorting matter, that whatever you are looking, that those kind of vlogs will be with the filtered But there is so much content available about science, about climate change, and all kind of knowledge is present on YouTube. So they have very less views. Vlogs, when people will upload their daily vlogs, within like 3 hours, it will get millions of views. So why do you think this phenomena? Why do people choose watching vlogs over other information content? Ma'am, there are various reasons. First thing, that is most of the people who are using the mobile phones for the watching various vlogs, so those are youth, and those are more attracted towards these new upcoming things. And instead of looking of the what are the actual situations are happening, just like climate change and all those things, so they are more attracted towards these things. So here I would like to mention the impact of the social construct, the upbringing of the students. At the same time here, schoolings, where we can say that these uh, climate change issues must be given more push for the students. Is Are you aware of the concept of voyeurism? Ma'am, I'll have to read about it. Yes, ma'am. Okay. Yes. Thank you. Okay, Arun, your interview is completed. Thank you. Okay, you can remain seated. We will give the feedback, है ना? आपका पहले इंटरव्यू में क्या स्कोर था प्रीवियस? Sir, it was 150 only, sir. ओके, तो अभी आप नर्वस क्यों हो इतने? Sir, आर यू कंफर्टेबल? sir, I'm a bit comfortable, but whenever the questions which are not in my front, that time I'm like a bit. In general,
मतलब देखिए फीडबैक मैं आपको ऐसे दूंगा ना कि जो आपको आगे ले आ सके, है ना, आपको डाउन नहीं करना लेकिन आपको आगे लेके जाना है। इन जनरल आपके ऊपर कुछ प्रेशर टू परफॉर्म टाइप का फील हो रहा है क्या इंटरव्यू में? सर होता है कभी कभी सर। यस सर। आप मतलब आपके अंदर वो जो नेचुरल कैपेसिटी, जो नेचुरल आपका फ्लो है वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर हम क्वेश्चन वाइज तो अलग बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल टेम्परामेंट की, ओवरऑल फ्लो की, आपका ग्रीटिंग बहुत अच्छा था। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट ग्रीटिंग, एंट्री, सिटिंग, एवरीथिंग वाज वंडरफुल। आपका स्टार्टिंग भी अच्छा था, लेकिन एक आध क्वेश्चन में जहाँ पर आपने थोड़ा मिस्टेक की, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता चला गया। ओके सर। ओके आपको फील हुआ अपने अपने लेवल पे? है ना, क्योंकि नेचुरल तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ में। नेचुरल तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा गलती करो, है ना। तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जनरली शायद आप नर्वस हो इस चीज़ को लेकर के कि मतलब थोड़ा परफॉर्मेंस वाला इशू, कि भाई पहले भी इंटरव्यू दिया हुआ है, फिर से मार्क्स कैसे आए थे पिछली बार, है ना, थोड़ा बैगेज चल रहा है दिमाग में। और उसी का इम्पैक्ट है कि आपको जो चीज़ आती है आप वो भी अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो, और जो चीज़ें नहीं आती हैं वहाँ पर आप रॉन्ग गैस कर देते हो। ओके सर। ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो मेरा पर्पस आपको मैं आपको कुछ नेगेटिव तरीके से नहीं वो बोल रहा हूँ, लेकिन अभी हमें पहले रियलिटी को समझना पड़ेगा कि हम अभी कहाँ पर हैं। ठीक है, तो अभी आप नेचुरल नहीं हो इंटरव्यू में, ये आपकी नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं है। एम आई राइट? मतलब दैट इज व्हाट आई कैन फील, है ना, कि आप नेचुरली अगर अपने दोस्तों से बात करोगे तो ऐसे बात नहीं करोगे। अभी थोड़ा सा आपके अंदर फियर है, यस। और ये क्रिएटेड फियर है, सेल्फ क्रिएटेड फियर है। नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है। देखो आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू तो होगा ही होगा आपका, वो तो डेट आपकी आ ही चुकी है ना। लेकिन हमें उस दिन ये देखना है कि आप नेचुरल कैसे रह सकते हो। यू हैव टू बी योर सेल्फ। और अभी ऐसा नहीं है। दिस इज व्हाट इज आवर एक्सपीरियंस आफ्टर दिस इंटरेक्शन। मतलब देखो हम ऊपर ऊपर से बता दें कि ये क्वेश्चन ठीक कर लेना, ये इन्फॉर्मेशन ठीक कर लेना, वो तो क्वेश्चन तो सेम आने वाली है नहीं, है ना। हार्डली का क्वेश्चन रिपीट हो गया तो हो गया। लेकिन हमारा जो पर्पस है वो ये है कि आप वहां पर उस एटीट्यूड के साथ में जाओ, अपना बेस्ट दे सको। गलती हो सकती है, गलती में कोई समस्या वाली बात नहीं है, एक गलती से आपको कोई जज नहीं करेगा, है ना। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को लेकर के सेल्फ रिफ्लेक्शन करो और जज मत करो अपने आप को। ओके सर। आप कहीं पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, आपको आता है लेकिन आप नहीं उसमें बोल पा रहे हो, और कहीं कहीं पे जहाँ पर नहीं भी आप ये भी बोल सकते हो कि सर आई डोंट नो, आप वहाँ पर भी ट्राई कर रहे हो। हाँ सर। ये तो फिर जहाँ पर आपको आता है तो वहाँ पर भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप उसको, मतलब आपको पता भी है कि नहीं पता है। ओके सर। तो अभी आपने कैसे प्रिपरेशन की है अभी इस अटेम्प्ट के लिए? अभी तक क्या प्रिपरेशन रही है आपकी? आपने प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार क्या डिफरेंट किया है आपकी प्रिपरेशन के लिए? मेंस नहीं, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए तो स्पेसिफिक ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है सर मुझे। अच्छा, मिरर प्रैक्टिस की आपने? मिरर प्रैक्टिस करो आप। मिरर प्रैक्टिस आपको जितना हो सकता है, यू हैव टू डू द मिरर प्रैक्टिस। ओके सर। ठीक है, अभी आप छुट्टी ली हुई आपने ऑफिस से? ठीक है, तो मतलब आपको जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आपको करना है, और जो आपको समथिंग विच मेक्स यू योर सेल्फ। आपको क्या गिटार अच्छा लगता है? गिटार, तो गिटार आपने कब प्ले किया था लास्ट? तो टाइम हो गया सर, क्योंकि महाराष्ट्र में रहता हूँ सर मैं, मतलब अभी हाँ। जम्मू कश्मीर उधर लेके नहीं गया हूँ सर। और डायरी कब से राइटिंग? डायरी तो लिखता हूँ सर, अभी रिसेंटली लिखा था। डेली लिख रहे हो? डेली नहीं होता है सर। अच्छा, वैसे भी डेली कभी लिखी नहीं आपने? डेली स्टार्टिंग में लिखता था सर, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड फॉर दिस डायरी राइटिंग, दैट टाइम आई यूज्ड टू राइट डेली ऑन अ डेली। तो क्या कर सकते हो सो दैट यू कैन बी योर सेल्फ?
मतलब देखो यहाँ पर एक दोस्त की तरह बात कर रहे हैं हम लोग, दोस्त की तरह बात कर रहे हैं। मतलब what kind of things should I do? मतलब what जो is आपको naturalness means what sir? मतलब exactly I'm not getting. देखो अभी ना आप जिस तरह से आंसर कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि आप प्रेशर में हो, आप गलतियां कर रहे हो। मैं आपको देखो सीधी फीडबैक दे रहा हूँ, है ना, घुमा फिरा के फायदा नहीं है, इस मार्क्स दे करके वो आंसर बता करके वो बता देंगे, उससे क्या ही फायदा होगा आपका, है ना। तो आप कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में भी हो, सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं हो। वट एवर यू आर राइट नाउ, यू आर नॉट ओके विद योर सेल्फ, यू आर नॉट ओके विद योर सेल्फ हु यू आर। मैं आपको थोड़ा फीडबैक लीक से हटके दे रहा हूँ, मतलब ना जो नॉर्मली बोर्ड वाले देंगे कि ऐसा एक क्वेश्चन, वो वाली टाइप की फीडबैक नहीं दे रहा मैं आपको अदर टाइप की फीडबैक दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो आप समझ पा रहे हैं। आई एम वट आई कैन, मतलब आप उसको समझ सकते हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना। आपको यू हैव टू बी योर सेल्फ सबसे पहले। क्या ये लैंग्वेज का इशू है क्या, इंग्लिश हिंदी का कुछ? आप आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश? कई बार हाँ वो भी हो सकता है, फ्लुएंसी का इशू है ना, हाँ वहाँ पर भी एक लैंग्वेज का इशू भी हो सकता है। तो देखो, एक तो जो आपको अच्छा लगता है वो करो, मैं फिर से रिपीट करूँगा। आपको गिटार अच्छा लगता है, गिटार प्ले करो, मतलब पहले ना फ्री करो अपने आप को, Okay sir. ठीक है। और तभी आप 100% अटेंटिव रह पाओगे। अभी आप फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन के पीछे भाग रहे हो, लेकिन फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि आपके पास में अभी तकरीबन 10 दिन हैं। तो 10 डेज में यू हैव टू बी योर सेल्फ अलॉन्ग विद वट एवर यू डूइंग, यू कीप डूइंग दैट ऑल्सो। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, कहीं पे कुछ भी करना है, वो तब करते रहो आप, लेकिन कम से कम डेली 2 घंटे अपने आप को, ठीक है सर। आपको जो भी अच्छा लगता है, ठीक है। और मिरर प्रैक्टिस करो, मिरर प्रैक्टिस करो। मिरर प्रैक्टिस का मतलब कि जो भी आप क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसको आंसर करो मिरर में एंड बी नेचुरल। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। तो और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रिसर्च तो, खैर रिसर्च तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जैसे प्लेजर और हैप्पीनेस वाला जो वो था, वहाँ पर आपने बाद में करेक्शन कर लिया था कि प्लेजर जो होता है वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन से संबंधित होता है, आप कुछ कंज्यूम करते हो, मटेरियलिस्टिक, जो आपने बताया था बिल्कुल सही। और हैप्पीनेस वो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। तो जो आपने बताया था स्पिरिचुअलिज्म, तो स्पिरिचुअलिज्म कैन बी वन वे टू रीच हैप्पीनेस, टू गेट हैप्पीनेस। और स्पिरिचुअलिज्म के बिना भी हैप्पीनेस हो सकती है, अगर आपकी लाइफ की फ़िलोसफी उस तरह की है, आपके डिज़ायर्स आपकी फुलफिल हो पा रही है, डिज़ायर्स कम है। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग चीज़ें बताई हुई हैं हैप्पीनेस के बारे में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो पैरामीटर्स हैं, एक जो आपने फर्स्ट पॉइंट बताया वो तो ठीक था, आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं। और मेरा जो क्वेश्चन था वो था कि डिस्ट्रिक्ट आपके एरिया में आप कैसे जज करोगे, लेकिन आपने बताया कि मैं ये स्टेप्स लूँगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अपने एरिया में हैप्पीनेस को कैसे जज करोगे, है ना, कैसे एस्टिमेट करोगे। तो आपने आंसर दिया, पहला वाला बताया कि बेसिक नेसेसिटीज़, और दूसरा बताया कि वहाँ पर हम कुछ कल्चरल फेस्ट कराएंगे, ये कराएंगे। तो लगा आपने आंसर शायद उस तरह से दिया कि आप हैप्पीनेस के लिए क्या करोगे। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो इंडिकेटर्स हैं, एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का हो गया, और उसके अलावा उसमें एक कुछ सोशल सपोर्ट, जेनरोसिटी, करप्शन, द परसेप्शन अबाउट द करप्शन, एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये 6 इंडिकेटर्स को आप जो है एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और रिसेंट स्टेटस क्या है इंडिया का वो देख लीजिएगा, और भूटान का कंपैरिजन कर लीजिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से, वर्ल्ड जो भूटान का इंडेक्स है उसका, और जो हैप्पीनेस करिकुलम है, थोड़ा हैप्पीनेस वाले टॉपिक को पढ़ लीजिएगा आपको, है ना। इसके अलावा कुछ बेसिक फैक्ट्स, आपने बजट तो पढ़ा है तो आपने वो तो सही बता दिया। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। और इसके अलावा पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में जो लैंड फ्रेगमेंटेशन वाला है, जो कि बहुत बड़ा इशू है, वो आपने बाद में बताया यूथ वाले केस में, वो फर्स्ट उसमें आना चाहिए था। हाँ, फर्स्ट आपके जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट ही आना चाहिए, लैंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। वाई यूथ इज़ नॉट अट्रैक्टेड, तो प्रॉफिटेबिलिटी वाला तो है ही इशू। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ में आपको इसमें ये भी बता सकते हो कि जो परसेप्शन है, परसेप्शन अबाउट द एग्रीकल्चर, वो भी इतनी अच्छी नहीं है। तो क्योंकि एग्रीकल्चर एज ए प्रोफेशन
हम इसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि ये शायद एक बैकवर्ड प्रोफेशन है और वही लोग करते हैं जिनके पास करने के लिए और कुछ नहीं होता। और रूरल एरियाज़ के बारे में भी हमारी जो परसेप्शन बिल्डिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो हमें यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, टैलेंटेड यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी तो लानी ही लानी है, जो कि जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी यूथ आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल सेगमेंट है ना। लेकिन वो कोर एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसके अंदर भी हम अगर हमें यूथ लेके आना है तो हमें पहले यूथ के माइंड में एग्रीकल्चर प्रोफेशन के प्रति रिस्पेक्ट क्रिएट करनी होगी। ये आप थोड़ा डाल सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा कुछ आपने फैक्चुअली आपने क्या बताया था, 40% जो आपने बताया था, क्या कौन सा फैक्ट बताया था आपने, याद नहीं आ रहा मुझे। फार्मर्स के थे ऐसे करके कुछ चाइना का ट्रेड दो फैक्ट्स थे। एक ये कि अच्छा, एक ये तो मैंने खुद से इन्वोक किया था कि इतना परसेंटेज फार्मर्स हैं इंडिया में, तो आई विल लाइक हमने पूछा था कि हाउ दैट विल हेल्प इन योर आईएएस या जो भी। अच्छा अच्छा, ओके। एक मतलब फैक्ट आपने 3 फैक्ट गलत बताए हैं मुझे। ठीक है, तो अगर आप फैक्ट गलत बताते हो तो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ में, जैसे चाइना वर्सेस इंडिया वाले में, चाइना वाले केस में तो 1/3 शेयर है वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में, आपने शायद 20% बताया था। हाँ, तो आपको गैस नहीं करना, यू कैन से नो, आई एम नॉट अपडेटेड। और 10 क्वेश्चन में भी नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैस तभी करना है जब आपको लगता है कि आप उसमें आपने पढ़ा हुआ है और आपको आप याद कर सकते हो। गैस अननेसेसरी नहीं करना है, क्योंकि गैस के बाद भी अगर आप एक आध में तो चल सकता है कि गैस के बाद आपने गलत बता दिया, लेकिन अगर सपोज आपने 4 बार गैस किया और 4 बार गलत बताया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बी कंफर्टेबल इन सेइंग नो। आप 10 टाइम्स कीजिए, 20 टाइम्स कीजिए, जिन चीज़ों पे आप नो बोलोगे उन क्वेश्चंस पे तो वो आपको जज कर ही नहीं सकते। ओके सर। हाँ, लेकिन वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है वो नहीं होने चाहिए, जो आपकी प्रोफाइल से सीधे सीधे संबंधित है ना। और जो आपके क्वेश्चंस थे ICAR के ऊपर, एग्रीकल्चर रिसर्च वाला जो आपका बजट था, वो फैक्चुअल पार्ट देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, जो भी फैक्ट्स मैंने पूछे थे। ठीक है जी। आपको कौन सा अटेम्प्ट हुआ? अटेम्प्ट तो है काफ़ी, मतलब दिया है मैंने। नहीं ऐसा है क्या लास्ट अटेम्प्ट है? नहीं वैसा नहीं है। तो इतना प्रेशर आप क्यों ले रहे हो? आपके पास ऑलरेडी जॉब है, यूजुअली जॉब वाले इतना प्रेशर लेते नहीं। Is there any particular reason if you are like thinking about it again and again? क्योंकि वो ओवर थिंकिंग तो बैक ऑफ द माइंड कर रहे हो, इसलिए वो रोक रहा है आपके सही आंसर आने के लिए। तो वट एवर दैट इज उसको एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है, या उसको जाने दीजिए जो भी रीज़न है ना, बिकॉज वो दिख रहा है कि देर इज वन पर्टिकुलर थिंग विच यू आर थिंकिंग ऑन, ठीक है, वो आप ही रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और दैट इज जनरली ये वाला प्रेशर पता है कब होता है कि जॉब नहीं है, लास्ट अटेम्प्ट है, एंड देन वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में पीपल टेंड टू परफॉर्म लाइक दिस, बट ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वो तो फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे। ओके, अदर थिंग इज देखिए, एक तो यार फैक्चुअल क्वेश्चन में तो नो बोल दिया, बट जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी आप अपने आप को हाईलाइट नहीं कर पाए। यस मैम। ये वाली दिक्कत है, और वो सॉल्व कर ही जा सकते हैं, बिकॉज ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आपके डैप से ही पूछे जाएंगे, उनकी कुछ लिमिटेशंस है कि वो इतने ही पूछे जाएंगे। तो अभी भी 10 दिन का टाइम है, तो उतना टाइम तो है कि उनको स्ट्रक्चर किया जा सकता है। फाइन। सर ने जैसे जो क्वेश्चन पूछे, सर ने प्लेजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, आपने एक डेफिनेशन बोली वो जो थोड़ी गलत सी थी, मैंने आपको इसीलिए क्वेश्चन पूछा ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, जैसे पुष्पिन इज एज ग्रेट एज पोएट्री, बेंथम का कोट है, Yes, Bentham. याद आया आपको? Yes. वो क्या बोलते हैं कि प्लेजर हायर या लोअर कुछ नहीं होता है, प्लेजर मतलब प्लेजर होता है। तो पुष्पिन में भी उतना ही मजा आता है जितना पोएट्री में आता है। तो बोलते हैं कि पोएट्री इज अ हायर एलिवेटेड आर्ट फॉर्म, उसमें ज़्यादा मज़ा आना चाहिए, फिलोसफिक कैलकुलस भी है, ठीक है, वो चीज़ नहीं आई सामने। पर्सनल इज पॉलिटिकल, फेमिनिस्ट का है वो कोट, है ना, कि पर्सनल स्पेस में जिस तरीके का सबऑर्डिनेशन होता है वही रिफ्लेक्शन होता है कि वो पॉलिटिकली भी वही दिख रहा होता है। तो ये चीज़ है ना, ये कैरोल हेनिश का कोट है, हमें इस तरीके से लाना है।
देयर वाज वन मोर थिंग, फार्मर्स पैराडॉक्स। तो वो आपने गेस किया। एक्चुअली वो क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज यू आर रिलेटेड टू आई कार। प्रॉब्लम क्या है फार्मिंग में, कि फार्मिंग में आप देखो दुनिया की हर गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को सब्सिडाइज करती है। अमेरिका में 70 मिलियन फार्मर्स हैं, हमारे यहाँ 250 मिलियन फार्मर्स हैं, तो भी अमेरिकन गवर्नमेंट कंपैरेटिवली उसका भी फार्मर सब्सिडीज हमारे बराबर ही आ जाता है। तो फार्मर्स पैराडॉक्स क्या है कि आप बहुत ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं, बहुत बम्पर प्रोडक्शन हुआ है, तो प्राइस गिर जाता है बिकॉज इलास्टिक नहीं है कंजम्पशन, और अगर फसल खराब हो जाती है तब तो प्राइस डिस्कवरी कुछ होने का है नहीं। तो कभी फार्मिंग की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है, ये फार्मर्स पैराडॉक्स है, इसीलिए एमएसपी दी जाती है, ये बेसिक है ना। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट ठीक है मैम। है ना, बिकॉज ये ना वो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे नहीं, बट फार्मिंग की प्रॉब्लम्स बताने में ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम आता है। ठीक है, फिर इसी में हम फिर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। अच्छा तो सब एक ही प्रोड्यूस मत प्रोड्यूस करिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूस हैं जिनकी कमी होती है, वहाँ पे एग्री एक्सटेंशन सर्विसेज आ जाता है कि फार्मिंग का पैटर्न चेंज करिए। एंड ये तो आईकार वाले से अच्छा कौन बता सकता है ना, बिकॉज आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो Yes, प्रोडक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वही चीज़ है ना कि आपको इतना सब कुछ पता है तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, है ना, और कॉन्फिडेंस से बोलिए, इतना अच्छा प्रोफाइल है, वर्किंग इन सच ए ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और आपका काम दो तरीके का है, यू आर डूइंग प्रोक्योरमेंट, यू आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद पीपल, दोनों चीज़ आप कर सकते हो, तो आपको तो अंडर कॉन्फिडेंट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।